In the sad history of persecution against Hindus, it has been going on for 1,000 years. Loud voices echo over the Jewish Holocaust and Armenian genocide, but when anyone raises a voice about 1,000 years, 4.5 million Hindus disappear from Pakistan, 5 million from Bangladesh, 2.5 million during the War of East Pakistan, 3 million starved to death in one of the Bengal famines, the 7th exodus of 600,000 Kashmiri Hindus, and ongoing atrocities against 2 billion living Hindus worldwide today, it is ignored as Hindutva, or even Hindu terrorist ideology. From this it is clear, the only path is real dedication to Ahimsa. The spiritual truths of Sanatana Hindu Dharma are the strength and root. The only foundation for a true future of non-violence and powerfulness has to be the proven royal and dharmic past of Vedic traditions. Dharmic kings were neither weak nor were they pushovers, but it has always been the spiritual sciences, the yogic sciences, that transcended violent reactions of searching for an outer world solution. Lasting solutions always come from a purified inner space. This can never be compromised. Not a single country anywhere on this planet of 200 plus recognized nations is allowed to be Hindu. Christian, Muslim, Jewish, Buddhist is fine, but not a single protected place for 2 billion living Hindus. It means we need more spiritual strength. Running outside to fight and oppose will not center the strength inside. Hindu devotees from around the world have banded together to petition local authorities, embassies, government, and human rights organizations to wake up the international community to the Hindu Holocaust, supported by an anti-Hindu ecosystem strongly rooted in India today. The borderless and world's only Hindu nation of Sri Kailasa began organizing various human rights organizations to awaken international support for terrorized Hindus living inside India. The borderless nation has also been running 3 shifts of around-the-clock outreach and healing both online and on the ground around the world for the past few months since COVID-19 intensified the need for increased support of all communities around the world. After more than a week now since 2 Mahants of Juna Akhara, Kalpa Vriksha Giri Maharaj and Sushil Giri Maharaj were brutally beaten and murdered on camera, along with organizer Nilesh Kelgad in Palghar, details have come to light of the political underpinnings and nature of the attacks as an organized crime attack by several well-known groups in the area. Various parties have long been well known to be active in crimes in the area, whose leaders were also seen on site the night of the murders. As cruel as it may seem, the sources of the murders are actually quite well known. Even across all major public media platforms, it just was never reported.
These crimes are common and well known. Those giving orders are very well known and clearly identified. It is shockingly very usual. द्वादशान्तश्यामला पीठारूढा श्रीमीनाक्षि सुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूपा परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वती स्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्रीचिह्न काहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धान्त स्थापनाचार्य श्रीराजाधिराज पाण्ड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महान्धकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम् अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्य कल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत
आदिकैलास नित्यानन्दपीठ महासंस्थान महासिंहासनपीठकर्तः साक्षात् श्रीपरमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मण्डित चतुष्षष्टि सम्प्रदाय प्रवर्तक मनुधर्मशासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुराङ्गी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणिपीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामण्डलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परम्परागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरो श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रीलश्री भगवच्छ्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञान वितरणेन विजयी भव जय जय। சித்திரை தேரோ
குறையெல்லாம் தீர்த்து வச்சாளே. தென்மதுர கோபுரமாம் தேரோடும் வீதிகளாம், தேரோடும் வீதியெல்லாம் முத்துமீனா நடந்தாளாம். சேலையிலும் கெண்ட சேலை சொக்கனவன் தந்த சேலை, கெண்ட சேலை மினுமினுக்க மீனாட்சி நடந்தாளாம். மீனாட்சி நேரில் வந்தாளே, நம்ம குறையெல்லாம் தீர்த்து வச்சாளே. பக்கத்துல அழகர் மலை, அண்ணனவன் வாழும் மலை. அண்ணனதா பார்த்து விட்டு அழகு மீனா வந்தாளாம். மீனாட்சி நேரில் வந்தாளே, நம்ம குறையெல்லாம் தீர்த்து வச்சாளே. தென்மதுர கோபுரமாம் தேரோடும் வீதிகளாம், தேரோடும் வீதியெல்லாம் முத்துமீனா நடந்தாளாம். வந்த வழி நல்ல வழி ஓடுதம்மா வைக நதி. வைகையிலே கால் நனைச்சு வந்தாளா முத்துமீனா. மீனாட்சி நேரில் வந்தாளே, நம்ம குறையெல்லாம் தீர்த்து வச்சாளே. ஆவணி மாட வீதி மாசிகளி வீதி சுத்தி, பசியா பசிக்குதுன்னு பார்வதியா சொன்னாளாம். மீனாட்சி நேரில் வந்தாளே, அட பசியா பசிக்குதுன்னாளே. தென்மதுர கோபுரமாம் தேரோடும் வீதிகளாம், தேரோடும் வீதியெல்லாம் முத்துமீனா நடந்தாளாம். பாலோடு தேனெடுத்து பழவகையும் தானெடுத்து, அம்மாவின் பசி தீர்க்க கோடி சனம் வந்ததுவா. கோடி சனம் கூடி வந்தாரே, நம்ம தாயாரின் பசிய தீர்த்தாரே.
வந்த இடம் நல்ல இடம் வாவரசி வாழும் இடம் வாவரசி மனசு வைக்க வாழுதையா நம்ம சனம் மீனாட்சி நேரில் வந்தாளே நம்ம சனத்தை எல்லாம் வாழ வச்சாளே மீனாட்சி அம்மா பவனி வாரா தேர் புடிச்சி அம்மா கிளம்பி வாரா சொக்கலிங்கநாதரு பக்கத்தில சேர்ந்துக்க வெக்கத்திலே ஆத்தாளே செவந்து வாரா மக்க முகம் பார்க்கணும் மனக்குற தீர்க்கணும் அக்கறையா ஆத்தாளே நேரில் வாரா மீனாட்சி அம்மா பவனி வாரா தேர் புடிச்சி அம்மா கிளம்பி வாரா சொக்கலிங்கநாதரு பக்கத்தில சேர்ந்துக்க வெக்கத்திலே ஆத்தாளே செவந்து வாரா பாடுபடும் ஏழை முகம் பார்த்திட வந்தா தேங்காய் பழ சுடங்காட்டி கண்ணத்தில போடு எருவடம் புடிச்சி அந்த தெய்வத்தை பாடு மீனாட்சி அம்மா பவனி வாரா தேர் புடிச்சு அம்மா கிளம்பி வாரா சொக்கலிங்கநாதரு பக்கத்தில சேர்ந்துக்க வெக்கத்திலே ஆத்தாளே செவந்து வாரா சித்திரைய பிறந்து புட்டா நித்திரைய மறந்து புட்டு பக்தசனம் முழிச்சிருக்கும் அழகிய மதுரை முத்துவட பூட்டிக்கிட்டு அட்டனையும் பார்த்துக்கிட்டு சுத்தி வரும் அத்தாளுக்கு இழுக்கணும் தேர மாட வீதியில் நடமாடி வருகிறா மாசி வீதியில் நல்ல ஆசி தருகிறா ஆணி வீதி அவனி வீதி ஆடி வந்தது தேரு தெருவடம் புடிச்சி அந்த தெய்வத்தை பாடு மீனாட்சி அம்மா பவனி வாரா தேர் புடிச்சு அம்மா கிளம்பி வாரா சொக்கலிங்கநாதரு பக்கத்தில சேர்ந்துக்க வெக்கத்திலே ஆத்தாளே செவந்து வாரா नित्यानन्देश्वर परम शिव समारम्भाम्
नित्यानन्देश्वरि पराशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome all the living and practicing Hindus all over the world and Sarvangipeta Kartas, Yajamans, Manifestors, Sarvaparityagis, Srimahans, Mahants, Kotaris, Tanedars, Kayakalpa Yoga participants, Kailasas, NHU students, NHG, Nityananda Gurukul students, and all the Paramashivoham level 2 season 3 participants, everyone sitting with us through Kailasa TV, Kailasas NTV, Kailasas Hinduism Now TV, Kailasas Enlighten app, Kailasas Nayanadiksha, all over the world. I welcome all of you with my love and respects. Today, 7th day of the Chittirai Brahmotsavam celebration in Adi Kailasa Nityananda Peetam, Sri Nityanandeshwari Varashakti Meenakshi is gracing in Sarva Alankara, seated on Adhiharanandi Vahanam, and Nityanandeshwara Paramashiva Somasundareshwara is gracing in Sarva Alankara on Swarna Rishabha Vahanam. Let's offer our worship today to them and the Guru Parampara.